तो कहाँ तक हुआ? तो चाइना से दोबारा से स्टार्ट कर लेना, मैं कर दूंगा इसको। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ लूँगा। चाइना के स्टार्ट करता है, शुरू से करता हूँ। हाँ मैं कर लूँ स्टार्ट। हाँ सी चाइना की जो टोन है, as there is a source that is available online that is on the US Naval Institute, China's Gulf War Education. जो It is by something like an retired intelligence officer of the US. I think his name was Mike Dam, DAHM. जो So he says कि जब मैं negotiations में बैठता था चाइना के साथ, in talks with the Chinese officials some 10 years ago, 20 years ago, so they used to be really polite, really humble, and they used to be like, we think that US Americans are superior in terms of everything and your political chasm. And they said, and he says now कि जैसे when I reach towards अब जैसे problems आ रही हैं, जैसे consultations, I sit for negotiations and I used to sit for talks with Chinese officials. अब उनकी टोन ही बदल गई है. Now they are much more aggressive. हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे. So टोन ही थोड़ी सी उनकी चेंज हो गई है. तो this suggests कि there's some sort of a new confidence after particularly after 2013, as it appears everywhere कि there are what it is China is doing is it is grabbing more territory in the South China Sea and everywhere, I mean around it. एक तरीके की assertiveness है चाइना में. As of what I think about the COVID thing, सी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इनका प्रॉब्लम होने वाली है चाइनीज को. द रीजन बीइंग इन स्पाइट ऑफ देयर स्लो डाउन in economic growth rate. The reason being that still there is a lot of FDI inflow in China and it is rising like double digits from 2020 to 2021, and it is some sort of an indication that the companies who want to set up their own projects in China, they are reposing more faith in the Chinese government to deal with things. As of with regard to see problem एक ये भी है कि अथॉरिटेरियनिज्म की through as Xi Jinping wants to make himself permanent in for posterity with regard to his occupation of the position of occupying the position of the premiership. See, as of what is coming out of China and what is the research that is available online, see problem that is occurring is that he might not be willing to listen to his advisors' critical advice too much. He might also not be willing to uh, listen to the negative cues that might come from the environment. कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है. एम्बिशियस माओ जितना ही हो सकता है आदमी, but reality he might be wanting to temper it, but he might not be willing to accept कि शायद reality में थोड़ी difference हो जाए. And as per an article of New York Times, the problem with regard to localization and development of the semiconductor supply chains is they are already occurring and they are facing repeated failures in spite of having invested billions of dollars. So ये problems आ रही हैं, but I don't think so. The Chinese, looking at the previous record of China since 1970s, yeah, even since 1940s, I don't think China might be stuck at any place for a very long time. I think they have an ability to self-correct, and I think पूरी दुनिया अभी रूठी नहीं है. For example, चाहे USA ने चाइना की बात नहीं हो रही, बात हो रही कम्युनिस्ट पार्टी की. हाँ, Communist Party has an ability to self-correct. So Communist Party, we saw Mao ने गलतियाँ की, they saw famines, millions die, and then they saw Deng Xiaoping. फिर he made some changes. Deng Xiaoping again made some changes after Tiananmen. और उसकी वजह से China is a communist parties keep on
they have promised because परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी कि हम तुम्हें जॉब्स देंगे, तुम हमें लेजिटिमेसी वगैरह दो, हम तुम्हें वी कैन ऑफर यू वेल्थ, मॉडरेट चाइनीज सोशलिस्ट वेल्थ एज दे से, कि मॉडरेटली वेल्दी सोसाइटी एज पार्ट ऑफ देयर चाइनीज सोशलिस्ट विजन, कि हम वी कैन ऑफर यू वेल्थ एंड यू गिव अस लेजिटिमेसी. तो ये तो चीज़ चलती रहेगी कुछ हद तक. एंड व्हेन वी लुक एट चाइना इज पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस, सी कोई बॉटम अप पॉलिटिकल रेवोल्यूशन तो नहीं आया चाइना में काफ़ी लंबे टाइम से. एंड हमेशा जितने भी रेवोल्यूशंस रही हैं, दे आर फॉर द लास्ट 100 years तक तो यही इट अकर्स कि टॉप डाउन ही रही हैं. Something like a central leadership decides something and that is to be implemented in the rest of the China. तो कोई पॉपुलर रेवोल्यूशन तो मुश्किल है अभी चाइना में. एंड हालत तो अभी वैसे बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एज इट इज अकरिंग इन द पब्लिक डोमेन थोड़ी बुरी तो लग रही है, बट दैट माइट नॉट स्टाइमी चाइनीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड social problems for that might not stymie political and economic growth and diplomatic and global growth of China for a very long time, especially now that the US has it has put some restrictions to with regard to the supply of their semiconductor technology to China. The Chinese might still find a vent because the rest of the countries like Germany, as it happened, they are willing to invest in China, and perhaps they might be willing to invest with regard to supply chains of the semiconductors. उनको Chinese को और ज़्यादा अगर US से ना दे टेक्नोलॉजी तो उनको UK दे सकता है, फ्रांस दे सकता है, जर्मनी दे सकता है, as it already happened for the last 20-30 years. And सिर्फ as it happened for the last 20-30 years कि not just US but even the British, even the French gave them technology, including the military technology since the 1990s, as it is also there written in the China's Gulf for Education by Mike Tan. That is an article on the US Naval Institute. जरूर पढ़ना अगर आपको टाइम मिले. और see, things are becoming a little complicated. For example, earlier it was happening that countries like UK, countries like Germany, countries like France, they were heavily into the camp of the US. Now what is happening is that EU, that UK, that France and Germany, they are some sort of middling. That रशिया के मामले में तो everybody stands against Russia, but चाइना के मामले में they back off a little. Then they want to recalibrate their ties with the US. We will think about it. When you say that कि हम China के साथ we want to restrict ties, EU वगैरह says and its discrete countries say separately कि we will think about it. हम review में रखेंगे, but there are no promises. So with regard to China, because of its extensive economic interdependencies with the European Union and the Germany, France and UK, these countries, these European countries, they think differently compared to what the US thinks. और श्रीलंका के बारे में क्या अपडेट है? वो रिकवर कैसे कर गया? अभी भी हालत माड़ी है. श्रीलंका की प्रॉब्लम यही है कि मैं तो यही समझता हूँ कि द प्रॉब्लम इज कि जो राजपक्षा साहब फैमिली आई थी, they did not handle things properly. थोड़ी सी ग्रेजुअल मैनर में it should have occurred कि थोड़ा सा इंक्रीमेंटल मैनर में चलना चाहिए था, because the economy was already faltering, it was already facing a lot of debt. और प्रॉब्लम इन श्रीलंका was कि आपकी पहले से जब चल रही है, you need to be much more careful. But he was not careful, and stories जो निकल के आ रही हैं that he was becoming very much authoritarian with regard to clamping down on dissent. There were forced disappearances. It is accused in the news. It also with regard to sudden change to organic farming. तो उसकी वजह से काफ़ी हार्म किया
इकोनॉमी को और उसमें प्रॉब्लम हो रही है, एंड लेट्स सी कि अब क्या उनका तरफ से यूनिटी होती है विद रिगार्ड टू द पॉलिटिकल पार्टीज की। नहीं, वो जो फ्यूल शॉर्टेज वगैरह चल रही थी वो खत्म हो गया वहाँ पर। फ्यूल शॉर्ट, सी यू कैन नॉट से पेरिनियली वो खत्म हो गई है, क्योंकि नहीं मतलब पहले तो ऐसा होगा ना, आपके पास मनी भी है मगर फ्यूल ही नहीं है, वो वाली तो प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। सी मनी की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की थोड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने खरीदना तो है बट उनके पास यू नो उनके पास जैसे इंडिया की हालत थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्ली 1990s में, तो वैसे उनके वहाँ पर अभी यही प्रॉब्लम थी कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो उन्होंने फिर इधर इधर से उन्हें एड वगैरह दी, तो IMF वगैरह को भी अप्रोच किया। तो लेट्स सी, अब IMF ने तो इट हैज फिट फॉर IMF तो पता ही है फिर कंडीशंस वगैरह इम्पोज करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या चेंजेस करता है, एक्चुअली में करता है भी कि नहीं। और अफगानिस्तान में अब तालिबान की गवर्नमेंट अब सबने एक्सेप्ट कर लिया है। सी एक्सेप्ट कर लिए, सी पिछली वाली गवर्नमेंट भी जो थी उसको भी किसी ने एक्सेप्ट तो किया नहीं था। काबुल के बाहर तो या के मेन सिटीज के बाहर तो कोई हार्डली कभी उनका था कोई बेस, पॉपुलर बेस, और लोगों ने कभी एक्सेप्ट तो नहीं किया उस गवर्नमेंट को जो काबुल में थी, एज इट इज ऑलरेडी अकरिंग। बट इट्स लाइक सी जो गवर्नमेंट गिरी, द रीजन बीइंग कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए that the Afghan soldiers, many Afghan soldiers, they surrendered without giving a fight. The reason being कि चलो जी अगर हम खुद आर्मी में हैं तो हमारा कोई चाचा भतीजा तालिबान में, इसकी वजह से द नेशनल लॉयल्टीज वो तो थी नहीं। नेशनल लॉयल्टीज जब थी नहीं तो इट वाज वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट टू फॉल, इवन एज कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है अफगानिस्तान में कि वहाँ पर कोई हाईवेज की प्रॉब्लम वहाँ पर अभी भी नहीं है। इट्स लाइक 40% वहाँ पर जो एरिया है इट्स कवर्ड विद हाईवेज वगैरह, काफ़ी सब्सटैंशियल एरिया वहाँ पर हाईवेज वगैरह हैं वहाँ पर। और तालिबान इट इज़ प्रीटी मच वेल कनेक्टेड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स प्रीटी पुअर। गवर्नमेंट तो कभी भी रूट नहीं था उसका किसी भी जगह पर। Problem was this, and हमेशा as early as 2010 it was already being said as per documentaries of Al Jazeera कि the Taliban is stronger over there with regard to their own criminal justice system in the rural areas of Afghanistan compared to Afghan police, compared to the Afghan criminal justice system। और उनका अलकायदा वगैरह का तो खुद का चलता ही था। और the problem also was कि even the American action they alienated a lot of people। बहुत सारे लोगों को अमेरिकन इंटरवेंशन खुद नहीं, प्रोलॉन्ग्ड अमेरिकन इंटरवेंशन ने एलियनेट कर दिया। और पीस बिल्डिंग कुछ खास हो नहीं रही थी अफगानिस्तान में, सॉरी टू से। तो इस करके दे फेल्ट कि अब चलो तालिबान कोई सपोर्ट कर लेते हैं। और अब तो मतलब इंडिया ने भी डिप्लोमेटिक वो शुरू कर दिया है। हाँ, रियलिस्टिकली तो फिर यही करना चाहिए, क्योंकि इंडिया हैड अ पास्ट इन 1950s 1960s कि हम जी कोई रजीम चेंज होगी वहाँ पर, डेमोक्रेटिक से अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, तो वी यूज्ड टू स्नैप आवर टाइज। अब नाउ वी आर पुटिंग इट वेरी रियलिस्टिकली विच इज़ अ गुड थिंग एज पर मी कि थिंग्स मस्ट गो ऑन, बट द प्रॉब्लम माइट बी कि वहाँ पर तालिबान में ही हलचल होती रहती है, उनकी लीडरशिप में हलचल होती रहती है कि और बहुत बार ये होता है कि जो दोहा में जो इनके ऑफिस है उसका स्पोक्समैन कुछ बोलता है एंड व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान वहाँ पर कुछ और होता है। what might happen in what might be decided in Kabul might be very different from what might be decided by any local chieftain or local tribesman over there। तो इस तरीके से थोड़ी सी अनरिलायबिलिटी कुछ हद तक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है with regard to India and Afghanistan ties। बाकी फिर अब चलो कर ही रहे हैं, एशिया टूर कर रहे हैं तो फिर बर्मा को भी क्यों मिस करना। वहाँ की क्या चल रहा है अभी?
सी उनका अभी एथनिक्स लेवल पे चल रहा है जब से आर्मी आई है एंड देयर वाज अ फेल्ड रेवोल्यूशन आई थिंक इट्स फेल्ड बिकॉज आई डोंट सी मच हैपनिंग ओवर देयर एंड नहीं मैनी उनको ग्रुप्स सूची को कुछ वो तो दिया है, कुछ पनिशमेंट तो दिया है, उसको क्या दिया है? या लाइफ उनको इम्प्रिजनमेंट दिया है। इम्प्रिजन कर दिया हम्म नाउ बियॉन्ड दिस इट इज नॉट नोन कि अब बेचारी है भी कि नहीं हम्म hopefully ho because she has been a great leader in the past सी म्यांमार की प्रॉब्लम हमेशा से यही थी कि आर्मी कभी पॉलिटिकल सीन से गई नहीं दे प्लेड अ वेरी बिग रोल स्टिल इवन आफ्टर शी वाज रिलीज सूची वाज रिलीज और म्यांमार की हमेशा से एथनिक वायलेंस की प्रॉब्लम रही है with regard to Rohingyas from the I think 1950s की 1980s में it happened uh, that they were thrown that their citizenship was snatched with regard to Rohingyas. तो prolong चलती रहती है वहाँ पर अब जैसे people who want to bring up want to change the military government वहाँ वो भी लड़ रहे हैं वो भी ऐसे भी टाइप के लोग हैं और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो प्रो डेमोक्रेसी है वो उनकी भी प्रायोरिटीज अलग हैं दे डोंट वांट टू अलाइन विद रोहिंग्यास डोंट वांट टू अलाइन विद प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स तो चल रहा है दैट माइट स्पिल आउट टू द नेबरहुड एज वेल अब बांग्लादेश इज मच लेस विलिंग टू टेक इन न्यू refugees. India's government at Delhi is also much less willing to take more Rohingyas. तो शायद ये चले स्पिल ओवर होगा मुझे लगता है अभी भी it will continue to spill over and if there is already a violation of their airspace Thailand that they wanted to bombard some militant group locations. So there was intrusion in Thai airspace, and that created some ripples. चलेगा. So I think ये issues चलेंगे थाईलैंड में म्यांमार में and who are the biggest who have leapt forward they are the Chinese. They have now a better they are now trying to be as mediators among the different actors and reputation तो हमेशा से ही अच्छी थी चाइनीज और मिलिट्री गवर्नमेंट की वहाँ and at a point of time in the past क्योंकि इंडिया ने भी कोई at a certain point of time interest नहीं दिखाया so they aligned with China at a particular point of time. USA is much less willing. USA is much less willing to engage with Thailand. Myanmar. So what Myanmar is doing that now that is aligning a little more towards China. And with ASEAN तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ASEAN की तो पॉलिसी यही रही है नॉन इंटरफेरेंस and even as it introduced some couple of points कि Myanmar government should heed with regard to its crisis, but वो तो अभी it's not happening on the part of the military government in Myanmar. So, but still it is being included in the different summits that are happening. That there is no restriction with regard to their inclusion in the talks of ASEAN. So चल रहा है. On the part of India, wisdom यही है कि that we continue to engage. With the government in Mandalay. ठीक है मेरा एशिया टूर तो पूरा हो गया. Thank you Udayveer, thanks for coming, thank you everyone for listening. Thank you, thanks a lot.